हेलो, कैसे लगाएं? यहाँ ठीक है। कितने लोग ही हैं? आ रहे हैं अभी? Any doubts related to GST? Interest rate? इंटरस्टेट अब है। आज की डेट में है अब। इंटरस्ट रेट मूवमेंट ऑफ गुड्स में अगर वेरियस स्टेट्स इन्वॉल्व हैं तो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आएगा, तो फाइनली वो टैक्सेस उस स्टेट गवर्नमेंट को वो दे देती है जहाँ पे फाइनल गुड का कंजम्पशन। राइट। तो इसमें कोई ये हैसल फ्री है? एकदम हैसल फ्री है, क्योंकि सबको पास ऑन कर देना है एट इन द कंज्यूमिंग स्टेट। ट्रांसपोर्टेशन आपने खुद से डायग्राम बना के देखा है इसका? एक बार बनाओ बनाओ बनाओ। कई बार खुद से भी चीजें क्लियर हो जाती है ना। हम तो क्लियर करेंगे ही अभी, लेकिन आप भी कुछ बनाओ डायग्राम। देखो इसमें बहुत सिंपल है। ए सोल्ड समथिंग टू बी, इट मूव टू दीज स्टेट्स। ठीक है, ए का वैल्यू एडिशन कुछ होगा, ए का वैल्यू एडिशन होगा एंड बी का वैल्यू एडिशन होगा, प्लस द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर, ही इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इन हाउ मेनी स्टेट्स इट पास्ड डजंट मैटर। देखो आप जब सेल होगा फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, देन ओनली वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आता है ना, देन ओनली वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो कितने स्टेट से गुड्स फिजिकली मूव, दैट डजंट मैटर एज सच। कितने स्टेट से मूव किया, दैट डजंट मैटर एज सच। देखो आप समझो एक चीज, A sold something to B. A sold something to B. 3-4 स्टेट से, ध्यान से देखो इधर, B purchased inputs from A, बांग्लादेश। ध्यान से देखना इधर, B purchased something from A and A is registered in UP and then B is purchasing railway transportation services from Ministry of Railway. So basically B is purchasing the raw materials from A and then it is, so B paid for A and B also paid for the transportation services, right? इसका 100 वैल्यू एडिशन, so B and suppose GST on that is 20%,
So B will pay 120 to A, plus B will pay transportation charges plus GST to Ministry of Railway. So basically B is purchasing two things, transportation service and the input from A. ठीक है. Now, so B will pay GST to A, which A will deposit, and B will pay transportation charge and GST to Ministry of Railway, which Ministry of Railway will deposit to टैक्स डिपार्टमेंट. समझ रहे हो? नहीं समझे? B will pay A 100 rupees plus GST, which A will deposit in this state plus central government. B will pay to railway transportation charge plus GST, which the railway will again pay to center, plus in whichever zone you have done, that doesn't matter as such. Ultimately, that tax collected by the railway will again have to be passed to this state, consuming state. तो कितने से मूव किया उससे फर्क नहीं पड़ता है. The GST collected on transportation service will again ultimately be given to half center and half this state. समझ गए? Clear? और कोई डाउट? हाँ, तो कल हमने कहाँ छोड़ा था? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटर स्टेट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. हाँ, जीरो रेटेड तो बता दें. अच्छा. Now on certain category of products, certain categories, sectors have not been included in GST. For example, petroleum products, alcohol, electricity and other things. Okay. Now how it is impacting A, B. So A is selling petroleum products. A is selling petroleum products. Value addition 100. So B will pay 100 plus, suppose it paid 20. Now 20 is excise and VAT, because petroleum is, he is selling petroleum products. Petroleum has not been included in GST. So B paid 100 plus 20, this 20 is excise and VAT, so it deposited to government. Now if B did value addition 200, and by using these petroleum products, B is producing transportation services, which is a part of GST. ठीक है ना? So now what should ideally B do? Suppose, so consumer is purchasing from B transportation services and B is purchasing petroleum products. Now when consumer is paying, ideally the bill should look like cost of inputs 120, value addition 200. Ideally होना क्या चाहिए? GST credit minus 20, this will become 300 plus GST 20%, 60. He should pay 300 plus 60. He should ideally pay 60. Ideally pay 60 and get back 20. But while he pays 60 and asks for credit, this is excise plus VAT. GST credit is given for GST paid. Now he is paying GST and asking credit of excise and VAT. This is not given. So he will not get anything back. So when he doesn't get anything back, GST credit he writes 0. And he passes this 20 burden to the consumer. So this becomes
320 plus GST 64. He pays 60 and he doesn't get any credit. हाँ हो गया. So it is creating issue. That is why, and why states didn't allow petroleum products and alcohol, because they were collecting huge revenue. So they thought that if they will lose taxation powers on these products, it may be possible that their tax revenues decline. So they didn't allow. But we have made in the GST that within 5 years we will be including these products under GST. The states का major revenue was coming from alcohol and petroleum products. That is why states didn't allow these products to be included under GST. But we have made a provision that in the next 5 years, these products will also be included as part of GST. ठीक है? So they are right now not in GST, but taxes are being levied on that. That doesn't mean they have 0%. ठीक है? They are out of the GST tax net. So on these products, we have the existing tax structure like excise VAT, whatever was there before GST. So when the government will add those products in GST net, so which slab it would be, or इसकी government क्यों will be 3 साल बाद अगर ऐड करते हैं, which slab will be, क्यों हमसे गेस कराना चाहते हो? because government collected, so it means huge revenue on these products. So Maybe 18%. I don't know कि तब तक क्या रेट होगा. because as we see, like Jack Daniels, branded alcohol is like 5,000, 6,000. छोड़ दो, I am not expert in that. Jack Daniels ले रहा है, क्या ले रहे हो? So we have different tax slabs, है ना? We have different tax. Now there is a model GST. There is a model GST which says that there should be one tax rate on all goods and services all over India. One tax rate on all over India for all goods and services, but we have kept 6-7 tax rates. Why? One is that there are a lot of poor people and there is so much of income disparity between rich and poor. We cannot have the same tax rate on wheat, tomato, pulses and Audis and BMWs. है ना? So that is why we have different tax rates. On basic necessity items we have less tax rate, and on luxury and demerit goods we have higher tax rate. So one reason is this of luxury, demerit items and basic items. So that is why we are having several rates. The other major important reason why we have kept several tax rates is, so we have kept around 0%, then 5%, then 12%, and then cess. Then cess. What are cess and surcharge? These are basically taxes only imposed for a temporary period. Imposed for temporary period. Now cess and surcharge, cess is imposed to get funds for a specific purpose. So we wanted to clean India, for that we imposed Swachh Bharat cess. So cess can be imposed to collect revenue for any specific purpose, and this cess can be imposed on any existing tax. So we imposed Swachh Bharat cess on on GST. हाँ? क्या मैंने पूछा? हाँ क्या? हाँ services. So I said that cess can be imposed on any existing tax. So we imposed Swachh Bharat cess on services, 0.5%. Above 400 क्या है?
we impose स्वच्छ भारत सेस on all service taxes. ठीक है. We imposed कृषि कल्याण सेस on services. So cess can be imposed on any existing tax for any specific purpose. ठीक है. But surcharge is just an extra tax if the income goes beyond certain point. जैसे we have 30% tax above 10 lakhs, 30% tax above 10 lakhs. But government says that if your income is more than 50 lakhs, then you have to pay an extra tax. Income tax only, but an extra tax above the income of 50 lakhs. That is surcharge, means extra charge. दोनों में difference समझे? Cess and surcharge. Cess is money collected for any specific purpose, and this is imposed on any existing tax, and surcharge is the same tax, some extra amount on a certain higher level of income. वो सरचार्ज ओला उबर में सरचार्ज होता है? देखो भाई सुनो सुनो सुनो, किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप गए, वहां पे कुछ दिया, ठीक है, वो स्टेट स्पेसिफिक है. स्टेट्स कैन ऑल्सो इम्पोज दैट. स्टेट्स कैन ऑल्सो इम्पोज दैट. अच्छा, ओला उबर के केस में ओला आप, अच्छा वो उनका अपना चार्ज है, इट्स नॉट अ टैक्स बेसिकली. हाँ, वो एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं, उनका अपना फॉर्मूला, दैट इज नॉट, गवर्नमेंट इज नॉट कलेक्टिंग दैट टैक्स. हाँ, क्या होता है भाई? आई एम सेइंग कि एनी स्टेट हैज फ्रीडम टू इम्पोज दैट. क्या अंडर विच भाई? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एनी स्टेट कैन इम्पोज एनी सरचार्ज. आई डोंट नो कि आपके स्टेट में उस बस सर्विस ने क्या सरचार्ज लगाया, बट दे कैन ऑलवेज पुट. जैसे अगर आप सेंट्रल देखो, सो वी हैव इम्पोज्ड education and health cess. In the last year budget, we imposed education and health cess. Cess, that means that amount is being collected for education and health purpose. So this cess must be imposed on some existing tax. So health and education cess is imposed on which tax? Personal income tax and corporate income tax. Personal income tax and corporate income tax पे we are imposing health and education cess. देखो आप ध्यान से एक चीज सुनो, on personal income tax we are imposing health and education cess. ठीक है, so that money, so we said कि 30% आपका टैक्स है and 4% is health and education cess. So that money will be collected and it will be used for health and education. But government is saying if your income is more than 50 lakhs, there is surcharge. Now that surcharge is just a normal tax only. It is being imposed because your income is more than. So it is an income tax only. Surcharge is the same tax. And cess is for any existing activity. Any activity you can impose cess. जैसे हम बोल दें कि 30% is corporate income tax. If government announces that कि 30% corporate income tax, that's fine. But all those companies whose profit is more than 50,000 crore will impose some additional tax, surcharge. Now that surcharge is the same corporate income tax only. It is imposed on certain higher level of income. But cess is for any specific activity and it can be imposed on any existing tax. So यहाँ पे cess भी है, that we will discuss for what purpose. So we have kept several rates. One reason you said that we cannot have the same tax rates on basic items and luxurious items, demerit items. And the other reason is, अच्छा, after implementation of GST, did our prices changed a lot or it changed very little? Prices of different products changed very little or it changed a lot? Very little. ठीक है. And the reason is, अच्छा, before GST, we had two major taxes. One was on sale, which was VAT,
and the other was excise, any process manufacturing. So center used to impose its excise and states used to impose its VAT. Now what I am trying to explain is why we have kept several rates. Why we have kept several rates. So suppose let's take car before GST. Before GST, let's take car. So car, now excise duty was not same on all products, it was different. There were 10 different rates of excise. Steel pay something else, bread pay something else. So we had different rates. So suppose car pay, the excise duty before GST was suppose 10% excise, and suppose VAT was 4%. Suppose this VAT is average of all these states, because states had different VAT rates. So we are assuming that 4% average VAT all across India on cars. Okay, before GST. Now we know that we had cascading effect. So approximately effective tax rate suppose 17%. Effective tax rate 17% because we had cascading effect. Now we have tried to put car in such a slab so that the tax rate doesn't changes much after implementation of GST. Suppose this chair, suppose before GST excise was 4% only, and VAT 1% only on an average. Effective tax rate मान लो 5.5. Suppose आप कुछ भी मान लो 9%, suppose 9%. Now you have tried to put this chair here. So basically what we did is we calculated effective tax rate before GST, and we have tried to keep that product in such a bracket so that effective tax rate generally should be same as per the post implementation of GST tax rates also. That is why your product price didn't fluctuate even after implementation of GST. If अभी टाइम बचा है ना, if you would have just one model GST rate, अगर एक GST rate होता कितना, कुछ भी आप ले लो, then all the products would have become the same rate. There would have been major fluctuations in the tax rates, and there would have been major fluctuations in the prices of the products. And that is why we kept several rates, so that there is not much major fluctuation in prices, because we have tried to match that slab. We calculated the effective tax rate before GST, and then we have tried to keep that product in such a bracket. जैसे services पे कितना tax था before GST? GST के पहले बर्गर कभी नहीं खाया? बिल नहीं देखे? कोई ट्रीट देता है तभी बिल नहीं देखते हैं, ऐसे भी नहीं देखते हो। जनरली कोई ट्रीट देता तब नहीं देखते हैं बिल, ठीक है, और कभी टैक्स समझने की कोशिश नहीं की तब भी नहीं देखते हैं। So before GST services पे we had 14% service tax plus कृषि कल्याण सेस एंड स्वच्छ भारत सेस 0.5%, तो 15% था सर्विसेज पे। वो एक अलग कहानी है, बता देंगे। So we had 15% tax rate before GST on services. So now services we have kept here. अगर एक टैक्स रेट हम लोग 5% रखते तो सर्विसेज को 5% करना पड़ता। So that is why we have kept several tax rates. Now we are planning to merge it. So now you will keep on seeing the fluctuations in the prices. But एक time में we see the model GST says that there should be one rate. क्योंकि one rate होता तो it is quite simple. All over India on all goods one rate है. It is quite easier for businessmen also. If they are selling different category of products, they don't need to adjust the tax rates for different products.
ऐसे बिग बाजार में जा रहे हो, एवरी टाइम दे नीड टू सेलेक्ट द टैक्स रेट विद दैट प्रोडक्ट. Suppose there is only one tax rate, the billing system will be quite easier. Now all over India, every day crores of transactions are happening. Every time they must select the different tax rates, and suppose there is only one tax rate 10%. कितना hassle free होता सब चीज, ठीक है. But slowly and steadily we will try to move to 2 or 3 tax rates. 2 or 3 tax rates. Government is planning to merge these two. So effectively हम लोग के पास 2 or 3 tax rates. जैसे सिंगापुर है, there is only one tax rate, I think 7 or 8%. एक tax rate, because it's a small city-based country, वहाँ feasible है. But India such a major, इनकम डिस्पैरिटी वाला रीजन उतना हाँ उतना नहीं, बस इंडिया में it's not feasible right now, ना. इंडिया में it's not feasible right now. So that's why you have kept several tax rates. Now the second thing, when we were planning to implement GST, states were concerned. That's why they were not giving their assent to implement GST. Why they were concerned? Because they thought that if we will implement GST, their tax revenue may decline. ठीक है. Now suppose before GST, the tax collection growth in indirect taxes. Before GST, the tax collection growth in indirect taxes was approximately, guess. गेस करना, आंसर नहीं बताना, गेस करो. उससे भी तो आइडिया लगेगा ना हमें कि कितना समझ रहे हो आप. All India or on a particular state? All over, I am asking indirect tax collection growth of all the states on an average before GST. अरे सुनो, I am asking tax collection growth. Tax collection growth, every year tax collection is increasing, na? So what do you think that tax collection was increasing at what rate? 6-7%, 3-4%, 10%. कल आपने एक आंसर दिया था, क्या दिया था? When I asked you that tax collection mainly depends on real GDP, nominal GDP. Nominal GDP. Nominal GDP. Now every year your nominal GDP is increasing by 6.5. किसने बोला अभी? सही से बताओ. ये 6.5 नॉमिनल, ये तो रियल ग्रोथ है ना. अब अगर आपको कोई नींद में भी पूछे कि नॉमिनल ग्रोथ कितना, हाउ कैन यू से 6.5%? इट इज 11.5% इंडिया का है. सो नॉमिनल जीडीपी इज ग्रोइंग बाय 11.5%. सो आइडियली टैक्स ग्रोथ 1% तो आप कैसे बोल सकते हो सच? 1%, 2%, 4% नहीं. सो आवर टैक्स कलेक्शन ग्रोथ वाज 14% अराउंड. देखो, आइडियली स्पीकिंग टैक्स कलेक्शन ग्रोथ शुड बी इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, बिकॉज tax is collected on nominal GDP, value-based taxation system ad valorem. So if nominal GDP is growing by 11.5%, so taxes should also grow by that. But our tax growth is more than the nominal GDP growth. Why? I'm saying कि indirect tax collection growth is more than, by products value of goods and services every year is increasing by what percent? 11.5. ये नॉमिनल जीडीपी जो आप बोल रहे हो, व्हाट इज दिस? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग बाय 11.5%, एंड दैट इज व्हाई आवर आइडियली आवर इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड ग्रो बाय 11.5%, बट आवर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ग्रोइंग बाय 14%, ज्यादा ग्रो कर रहे थे. इन विच केस इट कैन बी पॉसिबल दैट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रोथ इज मोर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ. कहीं किसी ने कैस्केडिंग बोला और आपने बोल दिया लॉजिक. मैं टैक्स कलेक्शन ग्रोथ की बात कर रहा हूं. इफ यू आर सेइंग कैस्केडिंग इफेक्ट, वो तो लास्ट ईयर भी था. आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ ना.
I am saying कि our nominal GDP is increasing by 11.5% and tax is imposed on nominal GDP ना? Tax is imposed on nominal GDP. Quantity into price पे impose होता है ना? So ideally if nominal GDP every year is increasing by 11.5%, our tax collection should also grow by 11.5%. But it increased more than that. Why? Before GST tax दूसरी स्टेट में सारा मतलब ट्रांसफर नहीं होता था, उस स्टेट का उसी स्टेट में रहता था। GST को तो आप छोड़ दो. Before GST, I am saying tax collection growth every year was more than GDP. देखो किस केस में ऐसा हो सकता है? If government, हाँ कुछ बोल रहा हूँ. Our tax administration efficiency was improving. Suppose last year on a particular product, just say you said, tax was 0%. Now in this year we increase the tax rate. We increase the tax rate. So if we increase the tax rate, our tax collection growth may be more than the GDP growth, nominal GDP growth. Right? Our tax collection growth may be more than nominal GDP growth. And if we are reducing corruption by somehow, we are bringing in more products under tax net, that will also lead to your increase in taxes more as compared to GDP. Right? So before GST, indirect taxes in India was growing at 14%. Now when we plan to implement GST, we have tried to keep such a GST rate so that tax collection growth should not get impacted. That is called revenue neutral tax rate. Revenue neutral tax rate. What is revenue neutral tax rate? That GST rate on which the tax collection growth is same as compared to whatever was the tax collection growth before GST. So we took into account, we calculated that what is the tax collection growth before GST, and that was around 14%. So 12, 13, 13, 14, 14, 15, India indirect taxes were growing by 14%. We have tried to keep such a rate so that even after implementation of GST, tax should grow at same rate. That such a rate is called revenue neutral tax rate, means revenue should remain neutral, that means revenue should not get impacted. Revenue neutral tax rate बोलते हैं. वो रीजन नहीं समझ में आया जो आपने बोला कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-11% और टैक्स कलेक्शन ग्रोथ 14%. So suppose after GST, a lot of people have come into tax-based tax net. Earlier they were not paying tax, but now they have started paying tax. So our tax will grow more by GDP. VAT before GST, on some products, suppose government was not imposing tax. Next year government increased tax on that. So our tax collection growth may be more than the GDP growth. Suppose government was earlier giving exemptions on certain products, and government always keeps on improving its tax administration efficiency. So if our tax growth is more than GDP growth, that means it's good for us, and in a way it implies that government's tax collection efficiency administration is improving. Suppose this year somehow SR Private Limited avoided paying taxes somehow. Now next year government became more strict, government implemented reforms and tax avoidance became difficult. So this institute will pay tax next year. Earlier this institute produced some goods and services, didn't pay tax, so it was counted in GDP, goods and services, but tax didn't get collected. Next year tax got collected, so tax will increase more as compared to the GDP. And what is that term called? So percentage
change in GDP, percentage change in tax revenue upon percentage change in GDP. Nominal or real? Nominal. टैक्स buoyancy इंडिया के लिए फॉर देखो यू कैन कैलकुलेट टैक्स buoyancy फॉर डिफरेंट टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी ओवरऑल और टैक्स buoyancy is more than 1.2 1.3 that means it's good for us that means our tax administrative efficiency is increasing if everything remains same this growth should be equal to this growth but if this growth is higher that means tax administration is improving समझ रहे हो तो आप ही से पूछ रहे हैं सेकेंड रो ये 50% कैसे कैलकुलेट उससे बढ़िया तो ये टैक्स buoyancy कैलकुलेट कर लेते 50% कहां से आया more hai to it's fine but if it will be less suppose we kept some GST rate and tax collection declined then what will happen so when we decided our GST rates on what basis we have decided such a rate so that tax collection should not get impacted tax collection at least we should get what equivalent growth 2012-13 2013-14 2014-15 from here to here suppose growth is 14% here to here growth is 14% if you are implementing GST suppose in 15-16 from here to here the growth should be 14% so from here to here for growth to be 14% what should be the GST rate here that's the GST rate is called revenue neutral GST tax rate then you can have revenue neutral that means revenue growth should remain same if you want to keep more you increase it so it will be better for the economy then demand reduces what is this definition of revenue neutral means your revenue should not get impacted you keep that tax rate so that your revenues should not get impacted. You can always keep more, you can always keep less. It has impacts. If you will keep less, tax collection will be less. If you will keep more, आप समझने की कोशिश करो when we are implementing GST reforms, we should always try that tax collection should not decrease. And if we also know that if you will keep tax rate very high, then again tax revenue declines revenue at till certain level it increases and after that it starts declining so you can keep it can be because of the rise in tax rate, right? But sir, the question is like, what will definitely be there next year? So tax balance is greater than when there can be several reasons: increase in tax rate, increase in tax administration. Both are true. But we try to achieve tax buoyancy higher than 1 by not increasing the tax rates, by increasing the efficiency. Because when you increase tax rates, prices increases, ultimately it leads to lesser demand in future. ठीक है? Because of that.
कम कर दिया गया है, टैक्स रेट कम कर दिया, फिर भी टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, हाँ तो टैक्स रेट कम कर दिया गया फिर भी टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, हाँ हाँ होता है। क्यों हो रहा है मतलब? टैक्स रेट कम करने से प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ता है, कंप्लायंस बढ़ता है, ऐसा होता है। सर आई एग्री, जो ये चेयर पे जो टैक्स है 4% प्लस 1%, अगर इफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट तो 5% होना चाहिए। अरे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट था ना, तो सर अब आफ्टर जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया है, तो अगर वो 5 पूछ रहे हो बता रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो ना कि आफ्टर जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया है। एग्जाम्पल आफ्टर जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट हट गया है, नहीं आपको क्या पता हट गया नहीं हटा? ये बताया था अगर हट गया है। हाँ फिर तो वो जो चेयर है हमने 5% में क्यों नहीं रखी? मतलब यार अगर इफेक्टिव टैक्स रेट अगर आ रहा है 11% तो 12% में रख दिए होंगे, मुझे हर का रेट तो याद नहीं है। अगर 6% आ रहा है इफेक्टिव टैक्स रेट एंड वी हैव अ स्लैब ऑफ 5%, वी कुड हैव केप्ट इन 5%। वो तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि किसमें, बट दे हैव ट्राइड कि ज्यादा डिफर न करे। बट पहले जब वो 9% आ रहा था वो कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से आ रहा था, हाँ तो जीएसटी के बाद वो हट गया है। हाँ तो इफेक्टिवली यू आर पेइंग 9% टैक्स रेट, so government didn't want to reduce its own tax revenue, so it has tried to keep in a similar tax rate. So, and when we see those products which are in zero tax slab, then why didn't we realize any change? Why you didn't realize any change? Because earlier also on those products 0% था। Like milk and some other products. तो देखो जिसमें अगर टैक्स रेट का नहीं चेंज आया दैट मीन्स पहले और अभी ऑलमोस्ट सेम ही रेट। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। प्रोसेसिंग कंपनी या किसी कंपनी को दिया जा रहा है सर, आप किसी डायरेक्ट मार्केट में सेल हो रहा है सर, प्रोसेसिंग कंपनी वाले पर जीएसटी की टैक्स लगेगा, प्रोसेस प्रोडक्ट्स पे लगता है जीएसटी, राइट? ठीक है, तो फार्मर सर वो जीएसटी पेड करेगा प्रोसेसिंग कंपनी को सेल। ए बी कंज्यूमर, ही इज अ फार्मर, ही इज अ प्रोसेसर, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, मिल्क प्रोसेसिंग, इसने 100 पे सेल किया, he will pay 100 only, no tax, he will not deposit tax. Now he processed, यहाँ पे 200, he processed, he will collect tax and deposit. अब किसी पर्टिकुलर ईयर में फॉल हुआ हो मुझे ईयर नहीं पता है सच, बट जनरली इट इज हायर 1.1 1.2 post GST and post demonetization our tax buoyancies for certain taxes has increased even to 1.8 also. जैसे पर्सनल इनकम टैक्स, you can calculate tax buoyancy of any tax. Personal income tax buoyancy increased to 1.8 post demonetization. तो demonetization का as such we didn't have any direct impact, but there are other indirect impacts. Tax buoyancy has increased. ठीक है, now when you purchase tea from the tea vendor जो बाहर बेचता है नुक्कड़ पे, तो do you pay GST or not? He charges GST or not? हाँ नहीं करता, why? रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, And why is not registered? उसकी जो टर्नओवर है वो एक मिनिमम ब्रैकेट, हाँ, so that says that if your turnover sales in 1 year is less than 20 lakhs, you don't need to collect GST, you don't need to pay GST. If your sales is less than 20 lakhs, तो 20 lakhs से less है तो they don't collect GST. But if it is more than 20 lakhs, you need to collect GST. You need to collect GST. But एक चीज आप समझो, जैसे A 100 value addition, B 200 value addition, he is selling to, so below 20 lakhs there is no GST. So B paid 100 plus 18 GST.
ठीक है. Now what does B do is B pays कितना 54 and gets credit 18. So effectively B paid rupees 36. Now B pays this and then he waits for this credit which may take generally 1.5 or 2 months. So for that time his money is blocked. For that time his money is blocked. And it's a cost for this businessman. He is a small businessman. It's a cost for him. Okay, because every time this money will be blocked. He will get this credit, then he will again sell another product. For that again that credit is blocked. समझ रहे हो? So here GST rate is 18%. आप समझो कि some money of his will be blocked for lifetime. क्योंकि हमेशा there will be some sale, he will pay tax and idle money. ठीक है? So and for a small businessman it matters. So what government, below 20 lakhs, so they don't need to collect GST. What government said to the businessman whose turnover is above 20 lakhs and less than 1.5 crore, what government said to be that you don't charge 18% from the consumer. 18% is the standard GST rate, suppose. Government is saying to be that you don't collect 18%, you don't pay 18% and you don't wait for credit. You just collect, suppose, you just collect 1% from him, GST. You just collect, you don't collect the 18%, you just collect 1% from him. You pay 1% and forget the credit. And forget the credit, don't pay the credit. So now he will not have to wait for it. जितना ही पैसा दे दिया. So his money is now not blocked. So either you pay standard GST rate 18% and wait for credit, or you pay certain percentage of your turnover, maybe 1%, maybe 5%. You pay certain standard rate which is lesser than the standard rate. You pay and you don't, then, but in that case you will not be able to get credit. This is an optional scheme for turnover between 20 lakh to 1.5 crore, and this is called composition scheme. देखो, if he is a tea seller, and he is selling tea in 1 year worth rupees less than 20 lakhs, so he should not charge GST. If he is selling tea worth more than 1.5 crore, so he should charge 18%. But if his sale is between 20 lakh to 1.5 crore, then government says to be that if you want, you may not pay the 18% standard rate, you may not pay the 18% standard rate, you just collect 1% or 5% from the consumer. You pay it, but in that case you will not get credit. Optional scheme. This scheme is optional. So if you want to pay standard GST rate, that's fine. But if you don't want to get involved into this getting credit back and paying a higher 18% rate, you just pay nominal rate 1%, 2%, 5% and leave this credit. बट वो बी अगर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले रहा है तो बी तो 18% ही पे करेगा. बी यहाँ तो 18% पे करेगा. कलेक्ट कम कर सकता है. कलेक्ट कम कर सकता है और कलेक्ट कम पे करेगा एंड ही विल हैव टू फॉरगेट द क्रेडिट. हाँ, so okay, so normal terms में you are understanding this thing? Normal terms तो समझते हो? So suppose government says कि composition scheme the rate is 5%. Rate is ideally this product whatever is selling tea, rate is 18%, but in composition scheme government said कि you collect 5%. So now what will happen? B के लिए cost of inputs 118. Will he get in composition scheme? Will he get credit? No. Value addition 200, 318, then composition scheme का रेट लगेगा 5% of this. कितना आ जाएगा 5%?
15.9. So 318 plus 15.9, it will be 337. ठीक है. So he will collect 318 plus 15.9. He will pay 15.9. Will he get credit? No. He will pay 15.9. बस खत्म. So now his money is not blocked as such. And this is optional scheme. Either he can pay standard GST rate and can wait for the credit, or he can pay a lesser rate specified by the government under composition scheme. But forget the credit. Restaurants पे वही applicable. Restaurants पे what is the rate? 5%. So all the restaurants, government has said that you can charge 5% and you pay entire 5%, you will not get credit. So restaurants are doing that. But all restaurants को applicable कर दिया government. You can different tweaks हमने किए हैं as such. But composition scheme is this optional. This composition scheme is equivalent to effective tax rate, right? Means like he's giving tax of 38 to 36 rupees, around 12%. So he will be charged. ये समझ गए? मत रिलेट करो. सर ये 5% रेट हर प्रोडक्ट के लिए fix है। देखो वो कंपोजिशन में स्कीम में डिफरेंट रेट्स थे, वो गवर्नमेंट रेट चेंज करती रहती है. ठीक है, उस रेट पे नहीं जाओ. लाइक फॉर दिस ईयर दे आर सेइंग 1%, वो चेंज होता रहता है जीएसटी काउंसिल. द ओनली थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज द कंपोजिशन स्कीम रेट शुड बी लेस और मोर देन द स्टैंडर्ड रेट. लेस देन. अब उसमें सर्विसेज के लिए डिफरेंट कंपोजिशन रेट है अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है. तो वो डिपेंड करता है कि व्हाट वाज द स्टैंडर्ड रेट इन दैट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द कंपोजिशन स्कीम रेट. जनरली कांट से समझ रहे हो. इफ द स्टैंडर्ड रेट वाज ऑलरेडी वेरी लेस, देन द बेटर है कि यू गेट द क्रेडिट, बिकॉज दिस इज ए मेजर बर्डन फॉर स्मॉल बिजनेसमैन. एक और चीज समझ लो, इसमें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है. रिलैक्स. अब मिटा दिए ना, अब कहां रहा एग्जाम्पल? हो गया. हाँ लग गया उसमें, तो होगा, वो आ जाएगा उसमें, उतने में आएगा. So that is why model GST says कि remove everything this thing, you keep one rate. अब मिटा दिए, बाद में पूछना आप. सर अगर इन जनरल क्वेश्चन ऐसा है कि विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस इज सेम. हाँ यस, वो कुछ एग्जाम्पशन से कुछ कैटेगरी उसमें नहीं हुआ है. अब बोलोगे पेट्रोल में तो नहीं, केस में तो नहीं है, बट ओवरऑल देन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज जीएसटी सेइंग. सर्टेन एग्जाम्पशन सर्टेन सेक्टर्स के लिए वो अलग चीज है. जीएसटी जैसे इफ आई से कि जीएसटी हैज रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट, ऑफ कोर्स ट्रू है, रिमूव किया. अब सर्टेन प्रोडक्ट्स पे इट रिमेन. अब कस्टम्स ड्यूटी वाला तो हमेशा रहेगा. इतना आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे होपफुली. Now we have different tax rates. We have different tax rates. Generally, we should have lesser tax rates on raw material. देखो, if there is one tax rate, that's fine. Otherwise, if you have different tax rates, we should have less tax rates on raw materials and higher tax rates on finished products.
When raw materials tax rate is more than the finished products, we call it inverted duty, inverted tax. Generally, we should have less tax rates on primary articles, raw materials, more tax rates on finished products. When on finished products the tax rate is less and on raw materials the tax rate is high, it is called inverted structure, inverted tax structure, inverted duty structure. Now try to understand, when we have different tax rates, then sometimes this inverted tax structure gets created. Sometimes this inverted tax structure gets created. For example, suppose that is fine, that is properly fine. Milk पे नहीं और पनीर पे है तो पनीर is finished. ज़्यादा है वो तो perfectly fine. Inverted कहाँ हुआ? If कोई example सोचो. Suppose है, suppose educational services, SR Private Limited is selling educational services, GST is 18%, it is purchasing chairs, suppose GST is 28%, तो inverted duty हो जाएगा, right? Inverted. Or since you don't know कि which product, even a final product, can be used as an input for another, so you cannot keep. So suppose you are keeping chairs, you may see कि it's a final product, you can keep higher tax rate, but some institution can always use this as an input, so for it can always have an inverted duty. This kind of problem gets created, and what kind of problem it leads to? What kind of problem it leads to? A, B, whatever A is selling, suppose A is selling this chairs, the GST rate is 100 plus 28, so he paid 28%. He is selling chairs. Now he is selling educational services. Suppose his value addition is only 20. हो सकता है? Value addition तो कुछ भी हो सकता है, right? And GST rate is 18%. तो GST rate is 18%, तो total value हो गया 120. 120 पे he will pay 18% and he should get credit. तो 120 पे 18%, basically cost of inputs 100, sorry, cost of inputs 128, value addition 20, credit minus 28, तो ये कितना हो गया? 120, और 120 पे GST रेट यहाँ पे कितना है? सपोज 18%, तो 120 का 18% 21.6. Now so consumer will pay 120 plus 21.6. Now he will pay 21.6 and he will ask credit for 28. The government doesn't give this. You can ask when you have paid more. So in case of inverted duty structure, this kind of cases happen. Right? If he has paid 21.6 and he is asking 20, this is not possible. ये नहीं होता है. So in case of inverted duty structure, this credit which the government gives, it is not a problem with value addition. No, it is not a problem of value addition. Any company, suppose I am purchasing chair, I just polished it and I want to sell it. तो आप बोलोगे कि आप मैंने value addition कम किया है. भाई, it is totally up to me that how much value addition I want to do. How can you say that it is the problem with the value? It is if the tax rate, if there is a single tax rate, if there is a single tax rate, even if there is 1 rupee of value addition, this kind of problem will never happen. This is not the problem of value addition. You cannot say to anyone that you are doing less value addition. उसका जितना मैंने उतना value add करेगा. This problem is happening because of inverted duty. You take same 18% rate, you just do 1 rupee value addition. You will not face this problem.
करके देख लो. I hope you are understanding this. 1 rupee का वैल्यू एडिशन कर दो, you take the same tax rates, you will not face the problem. कर लेना, आ जाएगा भाई. आप 1 रुपी के रखोगे, व्हाट विल हैपन, यहां पे 1 रुपी करोगे, इट विल कम 1281 minus 28, it will become 101. 101 पे हाउ मच, 28%. तो 101 पे 28% कितना आएगा, 28.28, and he will get 28. Effectively he paid 0.28 on value addition of 1. समझे? Consumer will pay 128 plus 20, 148 पे 80%. ये पे करेगा ना कंज्यूमर. 128 plus हाँ, सो इस केस में 148 हाँ, 18%. इस केस में क्या होगा? ही विल नॉट गेट क्रेडिट, तो यहाँ पे माइनस नहीं करेगा, वो पूरा पास ऑन करता है, वो कैस्केडिंग इफेक्ट आता है. इसीलिए वी शुड हैव वन टैक्स रेट. फॉर दिस रीजन देर आर वेरियस रीजन्स फॉर विच वी शुड हैव कीप वन टैक्स रेट, बट सिंस इनकम डिस्पैरिटी है, बट स्टिल अल्टीमेटली विल सेटल ऑन टू मैक्सिमम 2 or 3 टैक्स रेट्स. सो दीज आर द इश्यूज, ये आप ध्यान रखना. एक और मेजर इशू जो वो समझ लो आप, जैसे आफ्टर जीएसटी यू मे हैव हर्ड दैट एमएसएमई एंटरप्राइजेज लॉस्ट, है ना, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. ठीक है, a lot of have been closed and informal sector are facing issues. ठीक है, what kind of problem they are facing, देखो it can be asked in your prelims question also or mains question answer. तो आप what is the technical reason वो आप समझ लो, बाकी on top of it you can build your story. मेंस लिखने में स्टोरी तो आना चाहिए लिखना, बाकी टेक्निकलिटीज यू अंडरस्टैंड. सीसीडी, कॉफी पीने का ख्याल नहीं आ रहा ना, ओके. सो सीसीडी वाज अर्लियर परचेजिंग कॉफी बीन्स और चाय पत्ती, समझ लो. चाय पिलाता नहीं पिलाता सीसीडी, चाय मिलती है. सपोज इट इज परचेजिंग टी लीव्स, ठीक है. There is an informal business unit I, who was selling tea leaves to CCD before GST, and 100 rupees value addition. So CCD used to pay 100 plus suppose 20 is the excise and VAT. Suppose before GST it was paying 100 plus 20 excise and VAT, and he was not depositing this, he was avoiding this, and he didn't care about that because उसको आगे मिलता नहीं था टैक्स क्रेडिट. So he was not concerned whether he paid or not. Now we implemented GST. अच्छा, earlier he was purchasing tea leaves, formal enterprise selling tea leaves, informal enterprise selling tea leaves. ठीक है, informal enterprise selling tea leaves. When formal enterprise was charging, he was charging again 28, and he was paying it to government 28, and he was not paying to government 28. ठीक है, सपोज ध्यान से देखना इधर, ठीक, he was not paying to 28.
Now when he is an informal enterprise and he could have avoided paying taxes. In both the cases, CCD is paying 120. In both the cases, CCD is paying 120. And he knew that he can avoid tax. So what? So CCD can purchase from anyone. So what this unit used to do is, they used to reduce their price of product. They 90 plus 20% of 90, 18. So they used to charge this from CCD and they didn't pay taxes. They didn't pay taxes. So for CCD this was cheaper. And for him also it was more, and he was getting more than 100 because he was avoiding paying taxes. So he was, ideally he wanted this and he should pay 20. But to compete, he reduced his price without reducing his profit margin. Because he reduced his price, he is still getting 108, he is still more profitable because he is not paying taxes. And that's why he used to purchase from I. He didn't used to purchase from him because he used to pay 120. ठीक है? This was before GST. So before GST, a lot of informal enterprises were surviving on this model of avoiding paying taxes. Now, ध्यान से देखना है. Now when GST has come, so now CCD is saying that you deposit and give a tax slip. Give a tax slip. So earlier he was selling at this rate. Now if he again says this rate, he will have to pay 18 and he will be in loss. He will be in loss. Now there are two options possible. There are two after GST for him. After GST for him there are two options possible. Continue at this same rate, but then this money you will have to pay to government and your profit margin will reduce or business profit. Or you increase it to this and pay GST. Pay GST. Then again you will become equivalent to this. So if you will pay GST, increase, your competitiveness is also going, plus your margin is also going. Earlier you were getting 108, now you will get just 100. Now you will get just 100. So when they have increased this rate, they have lost their business to other formal enterprises. If they have not increased their rates, their business margin has declined. So MSMEs, a lot of informal sector MSMEs, government is saying that we are doing formalization of economy through GST. That means अब तो इनको register कराना पड़ेगा. So government is saying that we are doing formalization of economy, moving of informal sector into formal sector. But it is creating a lot of job losses or closure of informal enterprise also, because now their margin is getting reduced and they are losing to some formal business enterprise. जब वो इनफॉर्मल सेक्टर था और टैक्सेस पे नहीं करता था गवर्नमेंट, वो सीसीडी जब अपने कंज्यूमर से कस्टमर से चार्ज करती थी टैक्स, तो वो इनपुट टैक्स क्लेम कर पाते थे? नहीं करता था. तो पहले तो बहुत सारे केस में इनपुट टैक्स ऐसे भी नहीं मिलता था. ऑन ऑल इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था. वो क्लेम ही नहीं करते थे उसको, कैस्केडिंग नहीं. ज्यादा टैक्स क्लेम करते हाँ, थे, उसको डिपॉजिट डिपॉजिट. After the introduction of GST, you gave the two options. Did you give the options to the informal sector, or you forcefully asked them to bring them to the formal Government didn't say anything. See, now this enterprise will not purchase from him if he is not giving the tax slip to him, because he has to take credit. So government didn't say anything. Government said it implemented this thing. Now they will not purchase from him if he is not giving this tax slip to him. So that is the reason why they moved to GST and started paying 20 rupees. They started paying 20 this, so their margin reduced. Earlier they were getting 108, now they are getting 100. So their margin reduced. And if they will try to, they were earlier getting 108. If they will try to again get 108,
then they will have to sell at 108 plus 20% of this, and then they will lose with this. If they will try to maintain the same margin, they will lose with them. So either you reduce the margin or you lose So your business. when we are saying that this employee will lose job, then I business will close. हाँ. then F will hire them ना, because his गुड सही बोले, सही पॉइंट पे आपने हिट किया है. लेट मी एक्सप्लेन. 10 businesses, 10 coaching institutes, modular based or smaller coaching institutes, they were selling certain services, educational services worth rupees 1 crore. 10 institutes selling educational services worth rupees 1 crore. If a bigger institute wants to sell 1 crore services, it don't require the employees of all those 10 institutes. समझे? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो. If 10 institutes selling total service, education services worth rupees 1 crore, they were requiring certain employees. If they will all combine, if we want to sell the 1 crore services, same equivalent service, under one institute, one business, we can sell 1 crore of services under one coaching with a lesser number of employees. सबके पास एक एक प्यून थे 10 कोचिंग में. अब एक में एक ही या 2 से काम चल जाएगा, 3 से काम चल जाएगा. but still the loss is not that much high. है, इट इज हाई. आप समझो एक चीज, इनफॉर्मल में देवर मोर एम्प्लॉयड, देवर मोर इनएफिशिएंट. क्या नहीं समझ में आया? यहां मार्केट में बाहर लास्ट 1 महीने में क्या क्या खाया आपने, बताओ जल्दी बताओ. कुछ खाया? बर्गर, पिज्जा और समथिंग, चाट मसाला, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, कुछ वो मोमोज खाया? मोमोज खाया? ओके चलो. तो मोमोज फुल प्लेट या हाफ प्लेट खाए? फुल प्लेट. कितना पैसा था? प्राइस 80. हाफ प्लेट का प्राइस? सीरियसली? नहीं और नहीं, एक मैटर सलाड. इसी तो इकोनॉमी अभी तक नहीं समझ में आया. नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते. यू मस्ट नो दैट फुल प्लेट 80 एंड हाफ प्लेट 50 का मिलता है. वही लॉजिक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अब ये सोचना कि क्यों हाफ प्लेट 50 का मिलता है, क्या मार्जिन नहीं, आप सोच के बताना. वही लॉजिक यहां पे है. वही लॉजिक, सेम लॉजिक है. आप सोचना नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको. Sir, in your example, I live in Kamla Nagar. There are momos wala who is अरे 40 and they are giving half plate at 20. So क्या फिर से बोलो. like she is buying full plate in 80 and half plate in 50. But in my place, like Kamla Nagar, there is full plate for 40 and half plate for 20. देखो ऐसा, अच्छा आप सही से बताओ. एक चीज बताओ, जैसे 10 kg 5 kg आटा का पैक खरीदे आप, 5 kg आटा का पैक एंड 10 kg आटा का पैक, तो 10 kg पे प्राइस एग्जैक्टली डबल नहीं होता, थोड़ा कम होता है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में. ये क्यों होता है, सोच के आप बताना मुझे. सोचने के लिए जगह नहीं है. The machine, the people who used to आप सोच के बताना, अभी हम नहीं जाना चाहते. सोच के आप बताना, इंसेंटिव नहीं, सोच के बताना आप. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल. आप बड़ा एक चीज में बड़े काम करते हो ना, इट रिक्वायर्स लेस लेबर. छोटे छोटे जगह आप प्रोड्यूस करोगे, इट रिक्वायर्स मोर लेबर, इट बिकम्स कॉस्टली. फुल प्लेट बनाए या हाफ प्लेट बनाए, द लेबर कॉस्ट इज सेम ऑलमोस्ट. उतना ही लेबर का एफर्ट लगता है.
ठीक है. So when we increase the size of the factory, per unit cost of production decreases. Per unit cost of production decreases. इतना जीएसटी समझ गए काफी है. ठीक है. अच्छा, एक दो और एक ई-वे बिल है, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, ई-वे बिल. अच्छा, एक क्वेश्चन बता रहा, आप लोग बहुत पूछे मुझसे आपको. ठीक है. क्या चीज? उसकी गारंटी नहीं है. कहाँ चेयर कैसे नीचे होगा, छोड़ो यार. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, the price of a particular product all over the country will become same. फिर से सुन लो. After implementation of GST, the price of a particular product all over India will be same. True or false? How many of you think true? And how many of you think false? सोचो एक मिनट. What I am saying is कि after implementation of GST, the price of one particular of any product will be same all across India. Should you? That is totally your wish. I am just asking, the price of any product all over India will be same or not? It practically आज जो हो रहा है, you take any example and you tell me whether it is same or not. अरे same product, same brand, like this Faber-Castell marker. So the price of a particular product will be same all across India, or it will be different? देखो सुनो. Before GST, the price of a particular product used to be different in different states because of two reasons. First, different cost of production in different state, different business cost in different state. Second, different tax rates. भाई अगर यहाँ पे मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, my labor charges are more, my some other charges are more, ठीक है. And if I am doing something in Odisha, labor charges is less. So earlier, before GST, the cost of doing business, the price of any product was different in different states because of two reasons. First, cost of doing business was different, and second, different tax rate. Post GST, one thing we have removed. Now the same tax rate all over India, but still we can always have different cost of production. So still prices differ, but not because of different tax rate, but because of different cost of production. Cost of production differ कर ही सकता है. What if? What if this Faber-Castell has its factory in one particular location? तो उसके बाद जो cost effect करेगा वो तो transportation cost. हाँ, so when ITC processes its wheat into Ashirwad Atta, they purchase wheat in Punjab, यहाँ पे process किया suppose. When they are selling in Delhi, they put MRP maybe 300 on 10 kg pack. If they know that a packet is going to be sold in Bangalore, they know that they will have to pay transportation costs. So they include that and then they put a higher MRP, maybe 450 or 500. उनका उसका ज़्यादा होता है. So for sale in different regions, they put different MRPs because Bangalore में sale करना और यहाँ पे ITC is incurring different costs. E-way bill, हाँ.
right? So if you purchase a car from In Gurgaon, so it will be maybe cheaper, if you come to Karnataka and purchase, it will be higher cost, right? so if in that Ashima, so if the cars are transported, so the consumer should bear that transportation charge. Of course. But in case if in Karnataka we would have had one manufacturing unit, Then it may be same, it may, the advantages. right? That is true. That you are true. But the company should bear that transportation. No, why it should be here? If I have a factory in Delhi, I have only one factory of this. I am producing it here and I am selling all over India. I am, Selling your product, right? just because of it is not available in that area, it doesn't mean that that's not. See, 1 second. I am doing business. हम सेवा नहीं कर सोसाइटी की, समझो आप बात. I am doing business. यहाँ पे मेरा cost of production 10 rupees है. मेरा cost of production 20 rupees है. I am selling market in 25, 5 rupees margin I am earning. ठीक है, cost of production 20, sale 25. Now when I am selling this marker in Bihar, that transportation operator asked me to pay me some transportation charge. So on whom I will pass this cost on? Consumer will pay. That is a different thing. I may see. It is totally up to me what I can. अब ध्यान सुनो, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा. Let me explain you something more. So there are two things. First, I have factory in Delhi. So in Delhi, I am selling in 20 rupees cost of production plus 5. Remove the tax part. 25. Now if I am selling in West Bengal, I have to pay transportation cost to the transportation. So there I am selling in 35. Fine. 25, 35. एक ये ऑप्शन होता है. In this way also a lot of businesses operate. Second way, what I do is I keep the same price. The marker which I am selling in West Bengal, I may incur a loss. Here I may incur more profit. So I put all, here earlier I was selling 25, West Bengal 35. Now I put all the marker prices 30. And I am selling everywhere. So whatever was loss there, I am trying to recover it from. This way also I can do. It is totally up to me. This also I can do. I can sell in 30 rupees everywhere. But then a smaller company in Delhi, they will start, whose market is only in Delhi, they will produce in 20 plus profit margin 5, they will start selling in Delhi at 25 and I will lose this business of Delhi. होगा ना? ऐसा है. I hope समझ गए हो. तो होगा. चलो आप लोग काफी समझ गए. ई-वे बिल, अब आपका दिमाग काम करने लगा. सो नाउ यू कैन think over it. If you have doubts, you can ask. And what if I want that particular brand's car? So देखो भाई, पैसा दो और कंज्यूम करो, यही फिलॉसफी है. अब ये जीएसटी के बियॉन्ड है, मतलब जीएसटी से कहीं बड़ा ये पैसा है. पैसा दो, डोंट केयर अबाउट जीएसटी फीएसटी. what about sometimes we read into that Ambani and Adani's are giving lesser tax, but they क्या दिक्कत है? वो उतना एफर्ट ला के बिजनेस क्रिएट किए हैं. इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. अच्छा हाँ, हम क्वेश्चन नहीं, यही तो पूछा तो प्राइसेस वाला. इलेक्ट्रॉनिक वे बिल. सी, अर्लियर suppose I hired a transport operator. Now that transport operator charges from me his transportation fees and he charges tax also from me and deposit to the government. So a lot of transport operators avoid paying taxes. We have introduced this e-way bill. It is not any new tax as such. Government just say that if you are providing transportation service to me, you should charge transportation fees plus you should charge GST from me and you should pay this GST to the government. And this bill you should upload on the GST network.
and if you are transporting your good providing, then this e-way bill printed document you should carry while you are doing transportation. If you have been found that you have not got this document, you have not carrying this document, then a penalty will be imposed. So it is just to, this e-way bill is not a new tax as such, it will ensure compliance in GST payment. So I hired you as a transporter, आप मेरा transport goods करते थे, you took money from me and you didn't pay GST. Now you have to upload this bill, transportation bill, on the GST, and the time you upload, you will have to pay tax also, and you will have to carry this document while you are providing transportation services. Electronic way bill, एक bill generate करना पड़ता है for the transporters who are transporting goods worth rupees more than 50,000. ये नहीं कि एक ऑटो हायर की चेयर ले जा रहे हो तो rupees 50,000 or more पे है if you are transporting and 10 kilometers or whatever, then you need to have a e-way bill, you need to carry it, and that you will, how you will get, you need to upload this on the document, information upload karo and you will get a bill, and this is just to ensure compliance. So transportation पे now it is GST. Transportation is a service, you pay GST and you will carry that bill. Just suppose you hired my transportation services. He said that please transport my goods from Delhi to Lucknow. I am a transportation service provider. So I will fill all this detail Delhi to Lucknow value of goods. I upload in this network, GST network. So if I will upload whatever I am going to charge from him. So I said I will charge 1 lakh rupees. So if I said 1 lakh rupees, I will also charge GST from him. I am providing, he is consuming transportation services, na? I am selling transportation services. So I should collect transportation fees plus GST. GST I should pay to the government. So I will pay GST to the government. I will take 1 lakh rupees plus 18% GST. This information I will upload on the GSTN network. Once I upload this information, I will get a document that is called e-way bill. Now that document I need to carry while I am transporting these goods, so that in between कोई पुलिस वाला check करता है, तो I will say that I have paid taxes. तो compliance ensure करने के लिए. Otherwise earlier companies used to avoid paying GST on transportation. वैड में भी था, फिजिकल कॉपी था, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया. Transportation service provider, he is selling transportation service, so he should charge transportation service fee plus GST. सर्विस चार्ज में टैक्स है, जीएसटी है. हाँ, टोल इज अ डिफरेंट थिंग. टोल तो अलग ही चीज है ना. टोल तो चार्ज हो गया, उस आप प्राइवेट डेवलपर को टोल दे रहे हो. इट इज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट. यूपी, अच्छा मी, हाँ हाँ हाँ, I'm paying to you, it includes tax. I'm paying to the transport service provider, it includes tax. हाँ. Then won't I demand receipts from both of you, from you and the transport provider? Of course you will demand. Yeah, so why wasn't it enough? Why was this e-way bill needed? I mean, I could have simply demanded the receipt from transport provider and filed for my input credit. बी में A dash, you said that you purchase this product and you hire transportation service from here. ठीक है, transportation service from here. So you are saying कि I could have used input tax credit. That is right. Why this need of electronic way bill? ये तो सही बोल रहे हो आप. So input tax credit when I am already using this thing.
अच्छा, इसमें नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड रिवर्स चार्ज. कितना समझोगे इसमें? रिवर्स चार्ज वर्ड किसी ने सुना है? किसी ने नहीं सुना है? जैसे एसआर प्राइवेट लिमिटेड इज सेलिंग सर्विस. आई थिंक रिवर्स चार्ज का कैसे देखो, एसआर प्राइवेट लिमिटेड सेल सर्विसेज, यू आर द कंज्यूमर, यू कंज्यूम सर्विसेज एंड एसआर प्राइवेट लिमिटेड कलेक्ट्स जीएसटी फ्रॉम यू एंड इट पेज. ठीक है. सो इन केस ऑफ ऑल दिस सर्विसेज, हु इज पेइंग जीएसटी, द कंज्यूमर ऑफ द सर्विस और द सेलर? सेलर. सेलर पे करता है ना जीएसटी. ही कलेक्ट्स फ्रॉम द कंज्यूमर एंड सेलर पेज. In few exceptional cases, government has asked the consumer to pay. In few exceptional cases, government has asked consumer to pay. Like transportation service. Like transportation service. So transportation service में the consumer pays. Transportation service में consumer pays. Not all transportation services जहाँ पे कोई organization और institution involved है. For example, our company was providing transportation services to Rajasthan power plant. ठीक है. So we charged transportation fees and we should have charged GST. We were selling services, na? So we should have charged transportation fee and we should have charged GST and then we should have deposited. But we said that in this case, reverse charge is applicable. So you are consuming our transportation service, but you pay the GST. You pay the GST. Certain cases में reverse charge applicable. आप बस ये ध्यान रखना, reverse, because in almost all the cases, the producer, the seller collects the GST and he pays. Indirect tax में यही होता है ना कि consumer से collect करके he pays. But in few exceptional cases, a reverse charge mechanism applies and the consumer pays. उसका it is not direct tax, ये exceptional basis पे allowed है. And one of the exception is transportation, as per my knowledge, because we were involved into this. We were involved into this. Now what you said is कि that I perfectly agree कि वो B तो input credit ले लेता, ठीक है. So what is the purpose of ensuring this compliance? इससे क्या benefit होगा, ये तो पता करना पड़ेगा. Yes. In this case, so B's one logic could be whatever you asked. B purchased from it as transportation services, and most probably यही reason है. In transportation, B purchased from it as. Now he has to deposit. He is the consumer. He has to deposit. Reverse charge mechanism transportation में है. He has to deposit. Suppose he doesn't deposit that. He doesn't deposit that, तो बच जाएगा ऐसा. ये ऑपरेशनल इशू ऐसे जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी नो कि हमारे साथ एक राजस्थान गवर्नमेंट का एक लीगल डिस्प्यूट हुआ था. दे वेर सेइंग कि आप ही पे कर दो, एंड वी से दैट कि इसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, यू ओनली पे. और पे किसी ने नहीं किया. पे किसी ने नहीं किया. इट गॉट डिलेड फॉर 1 year. And government imposed penalty on the tax payment कि हमको तो 1 साल पहले मिलना चाहिए था. Then we fought a legal battle and ultimately we won because transportation में we have reverse charge. तो इस केस में ये केस हो सकता है सच. देखो आप समझो, एक चीज समझो. In all the indirect cases, the seller of the product or service, he collects tax and pays. But exceptional basis पे reverse charge में
द कंज्यूमर पेज, बट आप इतना बस ध्यान रखना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सर लेकिन सर ये भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि हम ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है इसमें जीएसटी, एंड इट इज एप्लीकेबल नॉट फॉर द नॉर्मल कंज्यूमर्स। आप ओला से जा रहे हो, now in that case reverse charge is not applicable. Ola will pay GST, it will collect from you and it will pay. In case of institutions के केस में है ऐसा, in case of institutions के केस में आप रिवर्स चार्ज वर्ड याद रखना, बिकॉज इन ऑब्जेक्टिव दे मे ऑलवेज आस्क। तो रिवर्स चार्ज में द कंज्यूमर पेज द कंज्यूमर हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स। बर्डन तो ऑफकोर्स वही इनकर करता है। और एक और लॉजिक है इसका, आपने पूछा ना कि ही कैन गेट द क्रेडिट। Suppose he is the final consumer. He is the final consumer, so he can always avoid that. और ऐसा होता है ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत होता है ट्रांसपोर्टेशन में, बिकॉज अ लॉट ऑफ केसेस में एंड कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं और वो टैक्स बचा लेते हैं। जैसे क्या होगा, आई हैव टू मूव माई बिलोंगिंग्स फ्रॉम एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट, मुझे नोएडा शिफ्ट होना है, मैंने वो कौन है इसमें पैकर्स एंड मूवर्स को हायर किया, ठीक है, पैकर्स एंड मूवर्स को हायर किया। अब ध्यान से सुनो, आप हायर किया, आई पेड देम 1 लाख, आई शुड पे जीएसटी एंड दे शुड डिपॉजिट। अब उन्होंने जीएसटी नहीं पे किया, जीएसटी नहीं पे किया, वो मुझसे जीएसटी सपोज कलेक्ट भी कर लिया, नहीं पे किया, नो लॉस टू देम, वो सेव कर लिए पैसा। लेकिन ईवे बिल आ गया है, नाउ इफ दे विल नॉट पे एंड वो मेरा गुड्स ले आ रहे हैं, बीच में अगर पकड़ लिए गए, इफ दे डोंट हैव द बिल, तो पेनल्टी उसमें। और ये पहले भी था इन हार्ड कॉपी, वैट के केस में था ये हार्ड कॉपी में। ट्रांसपोर्टेशन का हाँ वैल्यू पे, E-way bill is just to ensure compliance that the GST on the transportation has been paid. ट्रांसपोर्टेशन प्लस जो गुड्स की वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू, हाँ हाँ, गुड्स की वैल्यू होता है बिल, कितना का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। रिवर्स केस चार्ज किस में, आप मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से आप। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस the producer or the seller pays, he collects from the consumer. In certain cases reverse charge is, कई बार न्यूज में आते हैं, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, reverse charge is applicable. Reverse charge means the basic philosophy of indirect taxes changes, reverses. उसमें कंज्यूमर भी किसी किसी केस में पे करता है, इंस्टीट्यूशंस के केस में। तो आपको बस ये पूछ सकते हैं कि रिवर्स चार्ज इज रिलेटेड टू, इतना आ सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जा सकता। रिवर्स चार्ज इज रिलेटेड टू, दोस्ती से बिजनेस और टैक्स का कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट ले लेती है टैक्स। लेना पड़ेगा, हाफ एन आवर में ये टॉपिक खत्म होगा एंड नेक्स्ट हाफ एन आवर में विल डिस्कस द टेस्ट पेपर। सेंट्रल स्टेट्स टैक्सेस, ठीक है, सो दे बोथ कलेक्ट टैक्सेस, दे बोथ हैव द एक्सपेंडिचर responsibility. But central government collects more taxes. अच्छा, एक चीज और क्लैरिफाई करते हैं, कल आप लोग उसमें किसमें ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन सा टैक्स था? स्टैम्प ड्यूटी और वो
सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो स्टैम्प ड्यूटी तो इनडायरेक्ट था एंड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स था ना। हाँ, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि क्यों कन्फ्यूजन था ऐसे, समटाइम्स आई ऑल्सो थिंक कि क्यों कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो एंड एसटीटी डायरेक्ट टैक्स था, राइट? क्या एसटीटी डायरेक्ट टैक्स था? क्यों डायरेक्ट टैक्स था ये बताते हैं। आई ऑल्सो थिंकिंग कि क्यों आप लोग ऐसे कंफ्यूज। जैसे एक टैक्स होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, समझते हो? ध्यान से सुनना, ठीक है? डाउट होगा तो आप पूछना। सो आई वॉज वर्किंग इन माई कंपनी, सो कंपनी वॉज पेइंग मी सैलरी इनकम, so I need to pay tax, so tax burden on me and responsibility of payment of taxes on me, tax burden on me, responsibility of payment of taxes on me, ideally. But company used to deposit my tax, company used to collect my tax and company used to deposit my tax. So suppose my salary was 1 lakh, so company should pay 1 lakh to me and then I should pay 30% tax to the government, tax burden on me, responsibility of payment of tax on me. But what company does, company while paying salary to me 1 lakh, it automatically it already deducts 30,000 rupees from my salary and that company itself pays. देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक फंडा सब सेम है, बट बहुत सारे केसेस में फॉर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड फिजिबिलिटी, नाउ एवरी एम्प्लॉय पेइंग इट्स ओन टैक्स, डोंट यू थिंक इट इज बेटर फॉर द एम्प्लॉयर, अ कंपनी can handle this in a better way? So company deducts tax while paying the salary. So company paid salary to me, it deducted tax at source, जो source है मेरे इनकम वहीं पे, the company itself deducted the tax and it paid. Now still it is direct tax, ये केवल facilitate करने के लिए the company is paying tax. But even if company paid tax, टैक्स बर्डन ऑन मी एंड द रिटर्न विच आई विल फाइल, एक डॉक्यूमेंट बाद में सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट में द साइन विल बी माइन दैट आई हैव पेड टैक्सेस, ठीक है? आई हैव पेड टैक्सेस, मेरा ही साइन रहेगा। सो टैक्स बर्डन ऑन मी एंड आई एम पेइंग, दे आर जस्ट फैसिलिटेटिंग, वो डिपॉजिट करके फैसिलिटेट करते हैं, बट आइडियली दैट प्रिंसिपल रिमेन्स सेम। नाउ इन केस ऑफ एसटीटी, आई परचेज शेयर्स, ठीक है? सो जितना मैं परचेज करूंगा उसमें से डिडक्ट होगा 0.0 सम परसेंटेज रेट है, ठीक है? सो आई सेड कि एसटीटी इज डायरेक्ट टैक्स, दैट्स फाइन, डायरेक्ट टैक्स है, तो टैक्स बर्डन ऑन मी, मैं परचेज कर रहा हूं तो टैक्स बर्डन ऑन मी एंड आई शुड पे, बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सो आई पेड 100 rupees टू परचेज सिक्योरिटी, Bombay Stock Exchange deducts from my payment as a TDS and they pay. So tax burden on me and ultimately it is filed in my name, but payment वो कर रहे हैं just to facilitate. अब आप समझो, lakhs of people are purchasing security. अब हर बंदा अपना अपना tax deposit, it is more cumbersome process rather than Bombay Stock Exchange is paying on our behalf. है वो डायरेक्ट टैक्स, बट पे कर रहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जस्ट टू फैसिलिटेट मी, बट ऑफिशियली द रिटर्न विल बी फाइल्ड बाय मी, मैं ही पे कर रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा वो, दे आर जस्ट फैसिलिटेटिंग। ऐसे तो मेरा सीए मेरा टैक्स पे कर देता है, इज इट इनडायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट टैक्स में कर। हाँ, नाउ center and state, so center also collects taxes, states also collect taxes, but center has more taxation powers, so every year taxes are transferred from center to states, ठीक है? every year center, कोई डाउट है बताओ? every year center transfers to states. क्यों नहीं? उसी से तो होता है बर्डन ऑफ टैक्स और टैक्स पेमेंट, यही तो मेजर है फिलॉसफी।
देखो भाई, on paper legally stamp duty burden is on me if I am purchasing house, and legally it should be deposited by the stamp department, legally, indirect tax. In case of STT, if I am purchasing securities, I should bear the tax burden, मेरे से deduct होता है. Legally it should be paid by me, but just to facilitate Bombay Stock Exchange transactions डिडक्ट करके दे डिपॉजिट ऑन माई बिहाफ, प्रैक्टिकली फैसिलिटेट करने के लिए. ऐसे कंपनीज में भी सब जगह होता है. सो दे हैव मोर taxation power, so every year they transfer. Now this transfer, so whatever resources center is getting, it used to be transferred based on the recommendation of till 2 years back तक center used to transfer resources to states based on the recommendation of two bodies, finance commission and planning commission. ठीक है. Finance commission recommends transfers, two kinds of transfers finance commission recommends. Two kinds of transfer finance commission. So before 2 years, till 2 years back तक two bodies used to recommend transfer. Finance commission used to recommend two kinds of transfer. One is basically 42% of taxes. It is called vertical devolution. That means if the total central government tax collection is 100 crore, 42 crore should be given to states every year. 42 crore to each, 42% to each state, or टोटल जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसका 42% विल गो हियर. दैट 42% इज अगेन डिवाइडेड अमॉन्ग द स्टेट्स. इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन. यू ऑल मस्ट हैव रेड डिविजिबल पूल. ठीक है. सेकेंड इज कॉल्ड ग्रांट्स इन एड. सो दिस टैक्सेस आर डिवाइडेड नाउ. तो ग्रांट्स इन एड 3, देखो नाउ न्यू फाइनेंस कमीशन हैज ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड, दे विल बी गिविंग रिपोर्ट्स, तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत है. बट ओवरऑल पिक्चर शुड बी क्लियर दैट ग्रांट्स इन एड इज गिवन फॉर 3 पर्पस. लास्ट जो 14 फाइनेंस कमीशन था, द पीरियड वाज फ्रॉम 2015 to 2014 फाइनेंस कमीशन, 31st March 20 तक है. नाउ द न्यू फाइनेंस कमीशन व्हाट एवर इट विल रिकमेंड दैट विल बी एप्लीकेबल. सो टिल दिस ईयर 42% taxes and grants in aid. Grants in aid was given for 3 purposes: revenue deficit grant, disaster management grant and local bodies grant. उसमें ज्यादा जाने की आपको जरूरत नहीं है. So 42% जो शेयर होता है, all the taxes are shared. All the taxes are shared except cess and surcharge. So whatever central government collects as tax, every tax cut 42% should be given except cess and surcharge. Cess and surcharge are not part of the divisible pool. Divisible pool means whatever is divided between center and state. So cess and surcharge will belong to center. Rest all taxes are divided, and even the CGST. So SGST state को गया and CGST goes to center. Now the CGST which goes to center, out of that again 42% will be. समझ रहे हो? Every year it is given. What is the tax collection this year? Total central government का tax collection 22. Central government tax collection is 22.5 lakh crore. GDP this year, ये बताओ कितना आ रहा approximately? ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, दिस इज टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली. So our tax to GDP ratio is around 12%. Tax to GDP ratio is 12%. This is central government taxes upon GDP.
If you combine states, so total central and state government's tax collection upon GDP is around 17%. ये 22.5 lakh crore central government's total tax collection. Out of this 42% is shared every year. ठीक है. Center and state total tax to GDP ratio is 17. Center's tax to GDP ratio is 12%. और ये 22.5 लाख करोड़ टोटल टैक्स कलेक्शन है, इसमें से 42% इज टू द स्टेट्स. हमने जो क्यूपी वाला डॉक्यूमेंट है ना, उसमें ये लिखा हुआ है. They are not shared with the states. Specific purposes, not scheme, specific purposes. That will come, I will tell you. Huh? हाँ, but that is not shared, except that everything is shared. क्या कोई डाउट है तो बताओ जल्दी. CGST का सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल टैक्स कलेक्शन. But while explaining the GST, you said state GST also, the concept of SGST. This 22.5 lakh crore is the central government's total direct and indirect tax collection. Total central government's tax collection is this. Total CGST, personal income tax, corporate income tax, capital gain tax, all the central government taxes 22.5 lakh crore. क्या दिक्कत है? And if you add up states total tax collection, so this ratio is 12%. So this ratio is 12%. States tax upon GDP का that comes around 5%. So total India का tax to GDP ratio is 17% approximately. हाँ? This is total central government tax collection. See, हाँ? कितना परसेंट है? 6 लाख करोड़. देखो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स अराउंड 7 लाख करोड़, पर्सनल इनकम टैक्स 6 लाख करोड़, 6 7 13 जीएसटी अराउंड 10-11 लाख करोड़, 10-11 लाख करोड़ मेजर ये. आप रेशियो ऐसे जब देख लो कितना. हाँ हाँ राइट ट्रू. सबसे ज्यादा टैक्स जो कलेक्शन होता है, अब तो जीएसटी के बाद एक्चुअली चेंजेस हुए हैं ना उसके स्ट्रक्चर में पूरा एज सच. लेकिन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 6-7 लाख करोड़. सॉरी देखो, कॉर्पोरेट सीआईटी अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग एग्जैक्ट आपको देखना है 6 लाख करोड़. पर्सनल इनकम टैक्स और 6 से बढ़ गया अभी ये, तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7 पर्सनल इनकम टैक्स दिस मच. वो सीजीएसटी कंबाइंड था, सीजीएसटी अप्रोक्सीमेटली फिर से ये 6 हो गया. वो टोटल मिला के था दोनों सेंटेंस से 12 और 7 19. रेस्ट क्या है? एक्साइज, पेट्रोलियम, कस्टम्स, एक्साइज कस्टम्स सेस मिला के. ये याद रखना कि मैं जो सबसे ज्यादा वो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स. और ये इतना माइन्यूट डिफरेंस है कि समटाइम्स इट मे चेंज. मेजर डिफरेंस नहीं है ना. ठीक है. आउट ऑफ दिस 22.5 सीआई यही मेजर टैक्सेस है. समटाइम्स दे मे आस्क व्हिच टैक्स इज द हाईएस्ट शेयर, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, जीएसटी. सेस एंड सरचार्ज.
हाँ And surcharge is the tax which imposed on income higher than certain level. So indirect. देखो कलेक्शन कैसे होता है, आप सेस और सरचार्ज वो तो जिस टैक्स पे लगाया वही नेचर रहेगा ना, आप समझे नहीं। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, ठीक है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है। यू इम्पोज्ड, गवर्नमेंट इम्पोज्ड सेस, विच सेस? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट इम्पोज्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो जो सेस का नेचर होगा इट विल अगेन बी डायरेक्ट टैक्स ना, इट विल अगेन बी डायरेक्ट टैक्स। सर्विस टैक्स था 14%, गवर्नमेंट इम्पोज स्वच्छ भारत सेस, उसका नेचर क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। तो डोंट आस्क कि सेस एंड सरचार्ज क्या होगा, तो जिस टैक्स पे लगेगा वो दैट नेचर विल बी देयर। किस पे लग रहा है? देखो भाई, बिफोर जीएसटी 3 consecutive years government calculated indirect tax revenue growth, it was around 14%. We tried to keep such GST rates so that revenue growth remains same, but the growth is slightly less. The shortfall is around, last year, अभी तो एक ही साल का, total shortfall is around 4 to 5,000 crore. That central government will give to states, total states shortfall around 4-5,000 crore. That central government will give to states by imposing a cess on luxury and demerit items. तो 28% जो लग्जरी एंड डिमेरिट आइटम्स पे लगता है दिस टैक्स जीएसटी, ऑन दैट वी आर इम्पोजिंग अ सेस, एंड द नेम ऑफ द सेस इज नहीं, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेस। मैंने बताया ना कि सेस जब हम इम्पोज करते हैं इट शुड बी प्रीफिक्स्ड बाय द एक्टिविटी, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 28% जो हम सेस लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं? टू कॉम्पनसेट स्टेट्स। सो उसका नाम क्या है? कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स सेस। ऑडी या बीएमडब्ल्यू खरीदोगे तो उस पर लगा रहेगा, देख, यू गेट अ चांस। अच्छा ये समझ लो, अब डाउट्स इसके बाद पूछना आप। सो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स 2 kinds ऑफ ट्रांसफर, एक तो टोटल शेयर का 42% और दूसरा ग्रांट सीनेट। अच्छा एक चीज और समझो आप, this 42% which is given, for that do we require appropriation bill to be passed or not? By central government का total tax उसका 42%, here it should be given. Do we require? Why we don't require? अरे मतलब उसमें है कि नहीं है? अब नहीं है। We don't require appropriation bill to give this 42% of tax to states. The reason is this 42% which is given to states, it never forms part of consolidated fund of India. It is routed outside CFI. अब ऑपरेशनल लेवल पे कैसे होता है? डोंट आस्क मी, बिकॉज एवरीथिंग गोइंग इनटू CFI appropriation bill required approval, but this 42% which government knows it has to be given to states, it is routed outside CFI, so we don't require approval. But grants in aid, whatever central government is giving, for that appropriation bill approval is required. So finance commission used to recommend 2 kinds of transfer. Planning commission again used to recommend 2 kinds of transfer. One is, planning commission again used to recommend 2 kinds of transfer. First, देखो, just listen for 2 minutes. Till we had planning commission, central government used to prepare their own 5-year plan and state governments used to prepare their own 5-year plan. To implement the state's 5-year plan, central government used to transfer funds to states. ठीक है? For state's plan. So first transfer was, so उसमें क्या होता था? When we had the same government at center and state level, that state used to get more funds. When we had different governments, they used to get less funds. So first transfer was central assistance to state's plan. And second transfer was centrally sponsored scheme. So there were certain schemes which were sponsored by center, that means center used to give funds to states and the states used to implement it.
Now center assistance to state plan. Now there is no planning commission, no 5-year plan. So this transfer is no more. Do we have centrally sponsored scheme? Yes. Earlier planning commission used to recommend that which state will get how much fund to implement the scheme. Now who is recommending? कौन both? स्टेट और सेंटर नहीं, सेंटर बताता है बोथ का डिसाइड करेंगे, स्टेट्स इंप्लीमेंट, सेंटर सेज दैट वी विल गिव दिस मच ऑफ फंड्स. हु रिकमेंड्स दिस ट्रांसफर, मतलब कितना पैसा देना है, हु रिकमेंड्स दिस थिंग? नो, नॉट नीति आयोग. नीति आयोग हैज नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड टू रिकमेंड दिस ट्रांसफर. दिस ट्रांसफर इज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, पब्लिक फाइनेंस डिवीजन. नीति आयोग डजंट रिकमेंड दिस ट्रांसफर. Department of Expenditure, Finance Division. They consult Niti Aayog, but it is totally recommended by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Central Finance Division. क्या नाम है डिवीजन का? What is the name of that division? Central Finance, Public Finance Division. है ना? Public Finance Division है ना? So Public Finance Division under Department of Expenditure, Ministry of Finance recommends this transfer. कि किस स्टेट को कितना है. See, try to understand one thing. So it may say that कि जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, they may say that कि center will give 75%. Center will give 75%, but every states how much amount that Ministry of Finance now decides. Now he is asking central sector schemes. There are two kinds of schemes. Centrally sponsored schemes are sponsored by center, implemented by them. Central sector schemes doesn't involve this transfer. They are implemented by them only. Right. So there is no transfer kind of thing. अब कौन सा स्कीम एग्जैक्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है नहीं, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा स्कीम किस बेसिस पे इंप्लीमेंट हो रहा है. सच सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मेनली दोज आर द स्कीम्स अंडर यूनियन लिस्ट का है, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जनरली स्टेट्स का होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर करता है. ठीक है. सो मेजर टू टाइप्स के ट्रांसफर है. सो नाउ दिस इज नो मोर, बट दिस ट्रांसफर इज स्टिल देयर. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड दिस इज फाइनेंस कमीशन. वन टाइम सेंट्रली स्पॉन्सर ऐसा तो नहीं है. नाउ देयर इज अ पब्लिक फाइनेंस डिवीजन. अब वो रन टाइम पे होता है, द टाइम व्हेन यू इंप्लीमेंट दैट. स्टेट्स राइट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही होना चाहिए. सेंटर आई थिंक इट इज गिविंग 60%, स्टेट्स 40% दे रहे हैं कुछ. हाँ, एक या दो स्टेट्स नहीं एग्री हुए ना, वेस्ट बंगाल सर. वो आप लोग पॉलिटिकल इशू में पढ़ते रहना, टेस्ट पेपर लाओ. वो ममता बनर्जी का अपना पर्सनल इशू है. अच्छा, मेरा टेस्ट पेपर नहीं है. आप लोग शेयर कर लो आपस में. आई होप कि यू हैव नॉट फॉरगॉटन द कॉन्सेप्ट्स. हमें रिवाइज नहीं कराना पड़ेगा. आई जस्ट होप. तो आप सब लोग टेस्ट यहाँ दिए थे, चले गए थे, घर पे दिए थे? क्या चीज? प्रीलिम्स का एक सेशन के बाद होता है, बट मेंस का जॉइंटली होता है. मतलब मेंस का इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट कि इसी टॉपिक से पूछे. सो मेंस का विल हैव कंबाइंड टेस्ट. आप चिपकाओ या नहीं, रिवीजन के लिए गुड. हाँ. Which of the following RBI may do to curb rupee depreciation?
सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है. इफ यू विल इंक्रीज द रेपो रेट हियर, we may attract foreign investors here and rupee may not depreciate. Which of the following RBI may do to curb rupee depreciation, to stop rupee depreciation? If you will increase the interest rate here, FPIs will come. FPI will come because interest rate will be higher here. Why FPIs come here? Debt instruments. Because interest rate ज़्यादा है. Actually what happened in October, US increased the interest rate, FPI started moving out, rupee depreciated. So there was a thinking going on that we should increase the repo rate, but we didn't increase it. But if we increase the repo rate, in the short term, it may stop rupee depreciation. Selling dollars, वो तो export तो अलग reason है, but repo rate, if someone asks that, if interest rate here increases, will it help in rupee appreciation? Yes, it helps. It helps. Exporter का भी केस आएगा. Selling dollars in foreign exchange market. By selling dollars, तो dollar will depreciate. Dollar supply will increase. Dollar will depreciate. Rupee will appreciate. क्या? Selling dollars in foreign exchange market, this rate is decided in forex market. Forex market में dollar and rupee rate is decided. If here a lot of people will start selling dollars, supply of dollar will be more, dollar will depreciate, rupee will appreciate. फोर्थ में तो डॉलर अप्रिशिएट करने लगेगा. First question, first option, allowing importers to directly buy foreign currency from RBI. ये हमने बताया था. ये भी एक ऑप्शन है, बताया तो हमने था. See, try to understand one thing. आजादपुर मंडी, if a lot of big traders will go to Ajadpur Mandi to purchase potato price may increase. But if they will directly deal with the farmer to purchase potatoes, देखो एक चीज आप स्टेटमेंट ध्यान रखो, prices are discovered in the market. If we have not allowed any market for transaction, how will you tell me what is the price? So market discovers the price. So if someone will ask you that what is the price of potato, then you may ask that ki, are you asking in Ajadpur Mandi? So yes, we are asking the Ajadpur Mandi price. That is suppose rupees 20 per kg. If a lot of big traders will go in Ajadpur Mandi, price may move up. But if they directly dealt with the farmers, they said ki, please give me 1 ton potato at the ruling price in Ajadpur Mandi. So it may not increase the price that much. So when IOCL started going into forex market to purchase more dollars because oil prices increased, RBI asked IOCL ki don't go into the market. That market discovers the price. RBI said ki don't go into the market, take dollars from me directly. हाँ हाँ, तो रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये क्या होगा? हाँ, तो वही तो क्वेश्चन पूछा है. सेकेंड क्वेश्चन किसका? अच्छा, फर्स्ट का सी. सेकेंड का सी. सेकेंड का दोनों ट्रू है. किसको डाउट हो रहा है? नहीं समझ में आया? फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं समझ में आया? इसका मतलब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो ठीक से. ये तो क्लास में बताया हुआ. क्लास में बताया हुआ है नहीं बताया हुआ? किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था? 1947 से 1993 क्या हुआ था? इन्फ्लेशन हमारे यहाँ ज्यादा था. टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स वी डिवैल्यूड आवर करेंसी.
सो इन्फ्लेशन, अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको डाउट है? ये तो एकदम नहीं होना चाहिए। आप याद नहीं आ रहा तो याद करो, बादाम और अखरोट खाओ, ठीक है भाई। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ेगा तो योर एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव और लेस कॉम्पिटिटिव। इसको तो कुछ इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस कैन टेल दिस थिंग। यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव घटता है। इफ द कंट्री डीवैल्यूज इट्स करेंसी इन प्रोपोर्शन टू द इन्फ्लेशन देन अगेन एक्सपोर्ट्स विल स्टार्ट। यही तो हमने 1947 टू 1993 यही तो किया है हमने। जिसको अभी भी डाउट है वो बुक रिवाइज करके आएगा, वीडियो देख के आएगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा देन आई विल एक्सप्लेन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर है, देखो करेंसी एंड कॉइन्स आर फिएट मनी, ट्रू है। करेंसीज डू नॉट हैव इंट्रिंसिक, सेकंड फॉल्स है। थर्ड करेंसी एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर्स, ट्रू है। फर्स्ट एंड थर्ड बी। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ फोर्थ का ऑल ऑफ द अबव है, फोर्थ का ऑल ऑफ द अबव है। फोर्थ में आप जाके देखना, मॉनेटरी बेस इज लायबिलिटी ऑफ आरबीआई, एंड लायबिलिटी ऑफ आरबीआई में whatever banks have deposited, government has deposited, और करेंसी हेल्ड बाय बैंक, सब कुछ आता है। तो हमने एग्जांपल में लिया था क्लास में। फिफ्थ क्वेश्चन, banks keep their reserves in the form of gold, cash, government bonds. So reserve money of the commercial banks includes which of the fund? देखो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, इधर देखो आप, what does reserve money means? He deposited 100 rupees in bank. He deposited 100 rupees in bank. So I gave him banker gave him a deposit slip, and the banker is holding 100 rupees in its vault. Cash 100 rupees रखा है, ठीक, अभी किसी को लेन नहीं किया, 100 rupees रखा है। And then if someone asks that कि what is the reserve with the bank? 100 पूरा का पूरा रिजर्व में पड़ा हुआ है। If I will lend 80 rupees, then how much is reserve with the bank? 20 rupees बचा हुआ। मिनिमम कितना रखना है? 23.25। ना जो रखना है 23.25, that the bank has been allowed to keep either in cash form, either in gold form, or either in government bonds form। अब पढ़ो आप, सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड थर्ड बी है ऑप्शन, फिफ्थ का बी, फिफ्थ का बी। सिक्स्थ सी है, सिक्स का सी है, बैंक्स डोंट अर्न इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, सिक्स का सी है। सेवेंथ सेवेंथ का सी कहां से? ए है। फुल रिजर्व बैंकिंग में मनी नहीं क्रिएट हो सकता है। रिवाइज करके आना, क्लास के बाद पूछना, आपको बताएंगे, आप रिवाइज करो, बगल वाले से पूछो, वो बता रहा है ना अभी। सेवेंथ का ए आंसर, एट्थ का डी है। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपने देखा है ना, हमने यहां पे ड्रॉ किया था, they give money to all banks for onward lending, they give money to NBFCs for onward lending। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस था ना, वो पिक्चर याद है, डायग्राम, they give money to all the banks for onward lending, the development financial institutions also give money to NBFCs for onward lending। If I have set up an NBFC, सुनो, if I have set up an NBFC company, I can always take loan from NABARD and give you as a farmer। क्या प्रॉब्लम? कौन, कहां लिखा हुआ है? एनबीएफसी एग्रीकल्चर के लिए नहीं कर सकती और मोटर फाइनेंस कर सकती है।
If you can create NBFC to give loan to any sector. कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नाबार्ड जो है वो उसको भी रीफाइनेंस कर हाँ, नाबार्ड NBFCs को भी देता है, but NABARD will give to those NBFCs which are working in the rural sector. भाई, how can an NBFC not give loan to agriculture sector? If I have created an NBFC, this is Muthoot Finance. इंग्लिश स्ट्रांग करो, उस पैराग्राफ का मतलब समझ के बताना क्लास के बाद। नहीं, आप नहीं समझे हो, मैं बता तो रहा हूं। क्लास के बाद पूछना, बताएंगे कि उसका मतलब क्या। मुझे पता है कि मैंने लिखा है वो स्टेटमेंट, और वो पैराग्राफ आरबीआई से डिट्टो कॉपीड है। आप समझ लेना, ध्यान रखना ये चीज। दिस ऑल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये ऑल बैंक्स, कोऑपरेटिव, कमर्शियल फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग एंड एनबीएफसीज फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग, ये ध्यान रखना आप। 9th ए है। 9th का देखो, इसमें हमने प्राइमरी लिखा हो तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज इन्फ्लेशन, अरे प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अरे होगा नहीं यार, वी हैव नाउ, अर्लियर इट वाज ट्रू, यू नो, earlier it was true, but 2 years back when we enacted this inflation targeting, उसमें it is very clearly mentioned in that कि primary objective is only price stability, rest are secondary objectives. तो यहाँ पे अगर suppose I would not have written primary, I should have just written objectives, तो हो सकता था, but primary objective है। 10th का all of the above नहीं पता। प्रोविजनिंग से, प्रोविजनिंग अगेंस्ट एनपीएस पता है? प्रोविजनिंग अगेंस्ट एनपीएस, ये 4th स्टेटमेंट पता है? इफ द लोन बिकम्स एनपीए, सपोज 100 crore लोन ऑफ अ बैंक बिकम्स एनपीए, देन सम अमाउंट बैंक नीड टू कीप इन रिजर्व। From where it is keeping it, that's the bank's problem, but bank will have to set aside certain funds. Because NPA bana, that means depositors will become more risky. So certain funds it must keep in reserve, that is called provision against NPA. Banks need to provision certain things against NPA. Prompt characteristics तो हमने बताया है। PCA तो एक लिस्ट है where RBI says कि these banks का, अरे क्या बोलते हैं, these banks का certain parameters have deteriorated, then it keeps certain banks under prompt corrective action. Provisioning against NPA, that means the bank has given loan, that loan turned NPA, then that bank will have to arrange funds and they will have to keep that fund in reserve, they can't lend. Eleventh, all of the above. 12th, 11th का all of the above D है। 12th का अगेन all of the above है। 12th में क्या दिक्कत है तुमने बताया है? 12th का all of the above है। क्या चीज? ओपन मार्केट ऑपरेशन सेकेंडरी में ही होता है। कितनी बार तो बताया कि प्राइमरी में तो आरबीआई अलाउड ही नहीं है। आप लोग क्लास में ध्यान से सुने नहीं हो, इतनी बार वो डायग्राम ड्रॉ किया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइमरी डीलर, और फिर आरबीआई का तो डायरेक्ट लिंक वी हैव स्टॉप। थर्टींथ का देखो, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। 14th आप लोग नहीं पढ़े, अच्छा आपका कल करेंगे क्लास। 14th का FDI investment happens through primary market, true. FDI investment generally have lock-in period, true. FDI investment is about equity, D है 14th का D।
15th 14 का आंसर क्या बताया? 14th का D 1 2 3 कैसे काम चलेगा ऐसे? FDI इज इन इक्विटी ना, पहला इस तो घर चला जाए। जैसे अभी आप बोले ना कि ये तो बता चुके हैं, कुछ ऐसी चीजें जब आप पूछते हो ना तो लोगों को लगता है अरे तो बता चुके हैं, समझ गए ना, ऐसा ही फील होता है, अरे ये भी नहीं पता, और जब अपने पे आती है तो। 15th का देखो, FPI इज मेनली इनटू प्राइमरी मार्केट, फॉल्स है। FPI investment may happen through primary market, true है। FPI investment happens only in equity, false only in data, so only second statement is true, may happen through primary market, only second statement is true, B। 16th का D है। 17th का C है। परमानेंट रूल है, कन्वेंशन, जस्ट टू रिमूव द एम्बिग्यूटीज और डिफरेंसेस। 17th का C है, हाँ। इन केस ऑफ डिफ्लेशन पीपल होल्डिंग कैश विल गेट पॉजिटिव रियल रिटर्न। डाउट है? आप बताओ। अरे भाई, यू आर होल्डिंग 100 रुपीज कैश एंड प्राइस आर डिक्रीजिंग बाई 5%, योर रिटर्न इज प्लस 5%। हाँ। 18th 17th का तो ये है ना, डी सॉरी C है। 17th C है। 18th D, ऑल ऑफ देवर। ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बढ़ते हैं तो सेविंग्स इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। 19th 19th का आंसर है C। और ऐसा क्यों आंसर है हमने बताया था, देखो, इफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज हाई आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट, वो तो पूरा। आरबीआई डज एन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, उसमें आरबीआई आस्क्स यू दैट व्हाट विल बी द इन्फ्लेशन नेक्स्ट ईयर। इफ दिस सर्वे ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन tells that if you think that the inflation will be high next year, it ultimately results higher inflation on ground. So if the survey says, so right now suppose inflation is less, but if inflation expectation survey says that people are expecting that inflation will be higher next year, then RBI may increase the repo rate, because if you think that it will be higher, it ultimately results in higher inflation, so RBI increases the repo rate in advance. Repo, सुनो ध्यान से, repo rate is a tool to control inflation. If RBI thinks that future में inflation बढ़ने वाला है, it may increase the repo rate. तब मतलब क्या, तभी इंक्रीज करेगा। फिर और भी मेजर्स हैं, फिर देखो डबल डिजिट में जा रहा, दैट मीन्स देयर आर सम डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में मेजर, ठीक है, इट मे हैपन कि बिकॉज ऑफ हायर करप्शन मनी सप्लाई इंक्रीज दोनों, सो बोथ देन गवर्नमेंट एंड आरबीआई बोथ कम इनटू एक्शन डबल डिजिट में जाने पे, बिकॉज वन एजेंसी देन बिकम्स इज नॉट एबल टू हैंडल दैट इन्फ्लेशन। 20th क्वेश्चन, एक मिनट, फर्स्ट, द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट विल बी वेरी लो, जीरो, ट्रू है। पीपल एंड बिजनेसेस बोथ विल होल्ड ऑन टू देयर कैश एंड डोंट स्पेंड, ट्रू है। लिक्विडिटी ट्रैप, व्हाई लिक्विडिटी ट्रैप हैपेंड, बिकॉज पीपल वर नॉट विलिंग टू स्पेंड, दे आर होल्डिंग देयर मनी, नॉट विलिंग टू स्पेंड, दैट्स व्हाई लिक्विडिटी ट्रैप हैपेंड। People will be willing to spend fast. If people would have been willing to spend, then we would not have faced liquidity trap.
cash holdings of the banks increases. True or false? अरे एक मिनट हो गया, समझ गया, सुन लिए. अच्छा, when I say cash holdings of the bank, what do you understand? Or deposits. Cash holdings of the bank means whatever has been kept in demand form in bank. Cash with the bank means whatever is in the demand form, not time form. ये टर्म यूज होता है. जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास बैंक में इतना कैश पड़ा हुआ है. व्हाट डज इट मीन? डिमांड डिपॉजिट में पड़ा हुआ, विच आई कैन एनी टाइम विथड्रॉ. नाउ यू टेल मी, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 0%, will, if the interest rate is 0%, demand deposit, time deposit, both interest rate is 0%. Will you keep money in demand form or time form, or doesn't matter in any form? Demand form. अच्छा, टाइम फॉर्म में रख दिया और एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में इंक्रीज होगा. डिमांड फॉर्म में नहीं रखेंगे, बट टाइम फॉर्म में. बहुत सही लॉजिक भाई. इफ द इंटरेस्ट रेट इज 0%, you will keep in demand form, so that whenever interest rate increases you can withdraw and put into FD. If you will keep in time form at 0% for 2 years, you are gone. When the interest rate is 0%, you will not lock your money at 0%. You will keep in cash form, demand form. So in liquidity people have enough money, so what they do is they keep in bank cash form, demand form. Basically they keep either घर पे कैश रखेंगे और बैंक में कैश रखेंगे. So beyond certain limit you will keep in bank, demand form में रखते हो. इसका आंसर जो है, so first is true, second is true, fourth is true. First, second, fourth, C. 21st हमने कल 2 दिन पहले बता दिया. 21st, second, ऑफ कोर्स या सेम. हमने ये तो डिस्कस किया. ये 22nd का बी, 21 का बी, सॉरी 22nd का सी, 22nd का सी. सेकेंड स्टेटमेंट आपने क्यूपी अटेंड किया है? आपसे पूछ रहे हैं. अरे आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द, आई एम जस्ट आस्किंग डिड यू अटेंड इकोनॉमी क्यूपी? There is no international agency which says that only these currencies can be used. There is no basket of currency which you are bound to use for international transactions purpose. जो SDR से आप confused हो, that will be discussed in IMF. So currency which maintain a stable purchasing. Third statement, what do you understand? Currency which maintain a stable purchasing power. That means those countries where inflation is very less, we generally want to hold only that currency, because if the inflation is very high, you will lose that. So if the country has high inflation, that means the purchasing power of that currency may fluctuate as such. Second अभी पढ़ोगे आगे IMF में, basket of currency SDRs. Fourth, freely convertible currency are generally accepted. Yes. C. अरे सेकेंड अभी समझाने में 1 घंटा लगेगा, IMF में आप समझोगे. सेकेंड बास्केट ऑफ करेंसी स्पेशल ड्राइंग राइट से रिलेटेड है, आगे समझोगे आप. 23rd डी है, 23rd का डी है. 24th अगेन डी, ऑल ऑफ द अबव. 25th का सी, 25th का सी. अच्छा सुनो, आंसर नोट कर लो, जो बचा हुआ बाद में डिस्कस, पहले आप आंसर नोट करो. 25th का सी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं. 25th का आप आंसर नोट करो. 25th सी, 26th डी. 26th का डी, नीदर वन नॉर टू. 27th
D, all of the above. 28th, C, all of the above. 29th, D, 29th का D क्लास में बताया हुआ है. 30th का all of the above. 30 का all of the above. I don't want to rush it. आप लोग फिर से अटेम्प्ट करना और ये कल डिस्कस करें, अभी कर दें खत्म. कर ठीक है, ओके. एक से वहां पे चलते ना, कहां पे हमने स्टॉप किया. 25. हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट. सी हियर, इफ करंट अकाउंट वी हैव डेफिसिट मींस नेगेटिव है, so that means we require dollars. If we exported $100 billion, we want to import $150 billion. So from where $50 billion will come? Either we can take it from foreign exchange reserve, or if the capital account is positive. भाई देखो डॉलर्स कहां से आते हैं? कैपिटल अकाउंट में आ सकता है इफ इट इज सरप्लस, करंट अकाउंट में आ सकता है इफ इट इज सरप्लस. हियर आई एम सेइंग कि करंट अकाउंट में नेगेटिव है, दैट मींस वी आर इंपोर्टिंग मोर. So if we are importing more, from where dollars will come? Either forex reserve, or if net capital inflow means capital account we have positive. Net capital inflow means capital account positive है. 26 का कॉमन सेंस से आप कर लोगे. 26 हम नहीं बताएंगे. इट्स सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन. हाई आउटपुट लीड्स टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट. हाई आउटपुट, ये तो उल्टा है. हाई आउटपुट लीड्स टू 27th आपको पता ही है. 28th में किसी को डाउट? सर फर्स्ट वाला क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी. ये आपका छूटा हुआ है. 28th इंटरनेशनल ट्रेड क्रेडिट. मतलब लोन आप जो बाहर से इंटरनेशनल से ले रहे हो लोन, दैट विल बी अंडर कैपिटल अकाउंट. 29th का डी है, जान लो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिमोनेटाइज करेंसीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. और 30th में क्या डाउट है? आपने डिमोनेटाइजेशन की क्लास की थी? हाँ, तो वीडियो देख लेना और उसके बाद भी डाउट होगा तो देन यू आस्क. भाई ये तो हमने पढ़ाया हुआ. आरबीआई लायबिलिटी वुड रिड्यूस टू द एक्सटेंट द ओल्ड नोट्स डज नॉट कम टू द बैंकिंग सिस्टम. अरे ये हमने 1 घंटे में समझाया हुआ. जब आपको वहां नहीं समझ में आया तो व्हाट न्यू थिंग आई शुड टेल हियर? आप वो एग्जाम्पल देखो वीडियो में, वेरी क्लियरली आई हैव एक्सप्लेन दिस. और किसी को डाउट है फर्स्ट स्टेटमेंट में? हाँ, एक सेकेंड. सेकेंड ट्रू है, फर्स्ट एंड सेकेंड तो ऑलमोस्ट सेम ही है. थर्ड स्टेटमेंट इज इनडायरेक्ट एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस वुड डिक्लाइन टू द एक्सटेंट गोल पोस्ट डिमोनेटाइजेशन और ग्रोथ स्लो डाउन. और अगर हमारा ग्रोथ स्लो होगा तो टैक्स कलेक्शन स्लो. हाँ, अरे डिमोनेटाइजेशन के बाद अवर ग्रोथ स्लो डाउन बिकॉज पीपल डिडंट हैव मनी टू बाय द गुड्स, सो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हुआ. ग्रोथ स्लो डाउन में रियल जीडीपी रिड्यूस हुआ, नॉमिनल जीडीपी भी रिड्यूस हुआ, एंड टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन.